Hello, my lovely students. So, today we are going to cover a very important thing for your upcoming board exam, and that is all formulas of mathematics, right? Compilation of all the formulas of mathematics. Obviously, it will be a very important video or this session for you. So, pay attention, keep your notebook and pen with you, and try noting down all the formulas because they are super important. And one, let's start without wasting time. The first chapter is real numbers, and in real numbers, first and the I think one of the most important theorems is Euclid's division lemma, which is also known as fundamental, yes, fundamental theorem of arithmetic. Yes or no? Yes. According to this, A is equals to BQ plus R, where R is not greater than B. It will be from 0 to B. Correct. Now, what's the example of this? What's the example of this? First, let's see the example. For example, if I'm saying that the number is 12, or suppose A is 12, then 12, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, so it can be 4 into 3 plus 0. So in this case, remainder is 0, divisor is 4, quotient is 3. Or you'll say that's no sir, a divisor is 3, quotient is 4. It doesn't matter. Okay, it doesn't matter. And dividend is 12. So any number can be written as product of two other numbers along with remainder as the sum here. Are you seeing the pattern in which I have written? So, okay, this is one of the most important formulas we can say, or a kind of theorem we can say, in real numbers. Okay, in this you will understand how to do prime factorization. Prime factorization. Any composite number can be written as any composite number. I'm mentioning that also. Any composite number, okay, can be written as product of primes. Now you'll say that, sir, we need example also, right? How you will say something and you will not give example because we are doing maths, right? So for that, obviously I'll give example, and that is, let's take any composite number. Let's take this one only, 12. Then I can write it like 2 into 2, that is 4 into 3, that is 12. See, a composite number is written in terms of product of prime numbers, and that is prime factorization. That's all. Nothing, no, nothing different than this. Everything, any prime factorization, wherever you will do in class 10, 11, 12, prime factorization is this one only. Correct? Okay. Now let's move to another one. Polynomial chapter. In polynomial, the first thing, students, that you have to pay attention is the standard form of a polynomial: ax square plus bx plus c. Standard form of a polynomial. If you will do equal to 0, this will be a quadratic equation. These are some basic things that you should know. That's why I'm saying. Okay, but we are not seeing here quadratic equation. Then how I'll differentiate between a polynomial and a quadratic equation? Quadratic equation will have 0, but polynomial will not have 0 in it. Okay, fine, understood. Okay, now let's rub it here. Okay, this is the general form. And how I'll write zeros of polynomial, how I'll find zeros of polynomial, or how, what exactly is the relation between zeros and or the roots. Okay, we will not say roots obviously, because if I'll say roots, then we are again saying about quadratic equations. I'm not going into that. So zeros and the polynomial. Alpha plus beta, the sum of zeros equals to minus b by a. Alpha into beta is equals to c by a. Now sometime you'll see in some questions, I have seen some very important, uh, yes, in some previous year question also, sum of zeros will be given, product of zeros will be given, and you have to find the quadratic equation. So in that case, it will be
x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. Okay, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. Fine. This is the formula you'll use when the roots, sum of roots and product of roots, or again, not roots, sum of zeros and product of zeros is given, and you have to find the polynomial from here. Then you'll use this formula. I hope it's clear. Fine. Now, let's move to the third chapter, and that is linear equation in two variable. Many times, whenever I teach this topic, then students say that, sir, why we are actually learning linear equation in two variable? Whenever you will see a line, right, and another line intersecting it, we have to find the point of intersection. This is a linear equation line, this is another linear equation. Obviously, when they'll interact or intersect at a point, we have to find that point. For that point, we need two variables, right? 2 points, right, in a coordinate plane. Here, linear equation is important in order to find the solution of it. Now, graphical, just a second, yeah. Yeah, this is fine. So here, if you will see, students, consistent line means what? There will be two, means different cases here. I'll just revise it once again so that you can retain it for a longer time, right? Consistence, consistent and inconsistent, two cases are there in case of linear equation. When a1 by a2 is not equals to b1 by b2, that means the lines are intersecting and they'll have a unique solution, and it's a consistent case. By the way, it's already written, so I'll not repeat it. Inconsistent in the sense the lines are parallel. How a1 by a2 is equals to b1 by b2, but they are not equals to c1 by c2. The lines are parallel and they'll not give any answer. After that, there is one more case inconsistent. When the lines are coincident, there is one line and there is, suppose, another line on it. They are coincident lines, and in case of coincident lines, what we will do? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. Here you will get infinite solutions. Infinite solution. Here you will get no solution. Fine. Here you will get unique solution. I hope it's clear. Okay. After that, substitution method is there, which is very easy. Elimination method is there, again very easy. And cross multiplication method, I think it's not there in your syllabus, so you don't have to worry about it for your next exam, for this upcoming exam. If you are preparing for JEE and all, if you are interested in preparing for all those exams, then we'll discuss it later on. But this video is completely dedicated to board exam students, okay, board aspirants, okay, not aspirants, sorry, students, right? You're not giving competitive exam. Substitution method and elimination method is clear, I hope. Okay, if not, no problem. I'll just summarize that. So for example, there is an equation a1x, or I'm taking one example only. Suppose 3x plus 5y is equals to 8. Okay, 5y plus 10x is equals to 15. Suppose I will apply substitution method here. How? 3x plus 5y equal to 8. That means 3x is equals to 8 minus 5y. That means x equals to 8 minus 5y by 3. So in place of x, I have written 8 minus 5y by 3. I'll use it here in this equation. Okay. So 5y plus 10 into, in place of x, what I'll use, to 8 minus 5y by 3, that is equals to 15. ओके, समझ में आ रही होगी ना बात? मैं अभी हिंदी पे इसलिए आ गया क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको हिंदी प्रेफर करते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमको इंग्लिश में समझ में आती है, क्योंकि साउथ के बच्चे भी देखते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई, बट आई थिंक ओवरऑल यू कैन मैनेज, ओके, बिकॉज आई विल अप्लाई दैट व्हाट सबटाइटल देयर, ओके, ठीक है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5y प्लस, इसको ओपन कर दो, 80 माइनस 50y बाय 3 इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ हो जाएगा 15y प्लस 80 माइनस 50y इज इक्वल्स टू 45। आप लोग समझ पा रहे हो ना, मैंने एलसीएम निकाला, मैंने मल्टीप्लाई किया, स्टेप्स को थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और बच्चे अपने इंटरेस्ट लूज करना स्टार्ट कर देते, ठीक है ना। एक बुरी आदत है उनमें, क्या कर सकते हैं, पर ठीक है। -35y इज इक्वल्स टू 45 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। वैसे ये -35 ये भी हो जाएगा, तो y हमारा आएगा -35 बाय -35 1 आएगा, और y का वैल्यू कहीं भी यहाँ पे डाल दो, तो ये देखोगे आपको वो 1 ही आ रहा है, y भी 1 आ रहा है, x भी 1 आ रहा है। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरा राइटिंग यहाँ गड़बड़ दिख रहा है, आई होप यू विल मैनेज, ठीक है। और एक चीज हम करेंगे यहाँ पर, एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, बट आई थिंक बच्चों को पता है, अगर नहीं पता है आप लोग एक बार मुझे मेंशन करना कमेंट में, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो इजी है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत सिंपल सा चीज ये है कि आपको रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। रूट्स निकालने के दो तरीके, कौन से दो तरीके? पहला तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, सीधी बात ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मान लेते हैं कि अगर ये एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, नंबर तो नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मुझे इसको स्प्लिट करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, तो क्या रूल है इसका? यहाँ जो नंबर है और यहाँ जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करो, 6 आ रहा है, बीच वाले नंबर को इस तरह से स्प्लिट करो कि उनको प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। तो हम ऐसे ही करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सीधी बात है, x कॉमन जाएगा तो x प्लस 3 यहाँ पर, प्लस 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 जो है वो हमारा 0 है, या मैं ये कह सकता हूँ कि x जो है वो -2 आएगा और x -3 भी आएगा। पता चल गया। दूसरा तरीका है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो, जिसको कि श्रीधराचार्यज रूल भी कहते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा तो आर डी शर्मा देख लेना, उसमें लिखा हुआ है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बोर्ड में तो हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, नाम थोड़ी लिखना है मैथमेटिशियन का। सो माइनस बी प्लस माइनस होल रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैं फॉर्मूला कंपाइल किया हूँ, फॉर्मूला समझा रहा हूँ, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं समझाऊंगा अभी, इसके लिए अलग अलग वीडियोज में डालूंगा चैप्टर चैप्टर के अकॉर्डिंग। चैप्टर एनालिसिस भी आने वाला है हमारा, तो चैप्टर वाइज हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो भी आने वाला है अभी। हाँ, नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलेगा? जो डिटर्मिनेंट है डी है वो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ज्यादा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। If b square minus 4ac is equals to 0, then real and equal roots are there. If b square minus 4ac is less than 0, then the roots are imaginary, and obviously imaginary portion is not there in your syllabus. Okay, for now. Arithmetic progression, one of the most interesting chapters, और arithmetic progression में nth term का formula बहुत important होता है. How to find nth term in an AP? So it will be a n is equals to a plus n minus 1 into d. ये nth term का है, ठीक है। सम कैसे निकालेंगे? Sn का फॉर्मूला क्या है? n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला है। और कई बार हम ये फॉर्मूला भी लिखते हैं कि n बाय 2 इंटू ए प्लस एल, तब जब हमको लास्ट टर्म पता होता है। व्हेन वी नो द लास्ट टर्म देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, सिंस वी आर नॉट कंसिडरिंग हियर प्रिपरेशन फॉर जेई फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, अदरवाइज और भी सिनेरियोज आ जाते हैं कि पीछे से हम कैसे कैलकुलेट करें फ्रॉम द बैक साइड एंड ऑल। फॉर बोर्ड एग्जाम इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। सो लेट्स प्रोसीड, आइदर आप स्टैंडर्ड लिए हो या बेसिक लिए हो, डजंट मैटर्स, विल नॉट गो बियॉन्ड द सिलेबस फॉर नाउ, ओके। Triangles, basic proportionality theorem, that is also known as Thales theorem, very important and very easy. What actually Thales theorem says, अगर एक ट्राइंगल है और उसके एक साइड जो है वो, मैं पहले नंबर लिख देता, मैं लेटर लिख देता हूँ ए बी सी डी ई। So here DE is parallel to one side of a triangle, means DE is parallel to BC, then AD by DB
इज इक्वल्स टू AE बाय EC, ये थेल्स थ्योरम है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। देखो बच्चों क्या होता है, अगर आपको कहीं भी दिया रहेगा कि DE पैरेलल नहीं है, देन यू विल नॉट अप्लाई BPT। नाउ पाइथागोरस थ्योरम वेरी इजी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये आप देख सकते हो, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखो बेसिकली क्या होता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, वो होता है। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ओवर, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर वी हैव टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ टू नंबर्स, ऑफ टू पॉइंट्स। अगर एक पॉइंट है a, दूसरा पॉइंट है b, a जो है वो x1 y1 है, b जो है वो x2 y2 है, तो मैं इसका मिड पॉइंट कैसे निकालूंगा, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, m x1 प्लस x2 y2 और दूसरे वाले का y1 प्लस y2 by 2, लाइक दिस। सेक्शन फॉर्मूला सुपर इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, mx2 प्लस nx1 by m प्लस n, my2 प्लस ny1 by m प्लस n। अब ये क्या है भाई, देखो a b कोई भी पॉइंट है, मान लेते हैं वो कट कर रहा है a और b को किसी रेशियो में, रेशियो इज m and n, हमको x y का कोऑर्डिनेट निकालना है और ये कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है x1 y1 and x2 y2। So what you will apply here, mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n, like this. Area of triangle, as I know, this is not there in your syllabus, so you will not see this one. Okay, fine. Introduction to trigonometry, here we will see that sine theta, if it is a triangle, okay, this is theta, sine theta is p by h, cos theta is b by h, tan theta is p by b, fine। sin square theta plus cos square theta 1 होता है, 1 plus tan square theta is sec square theta and 1 plus cot square theta is cos square theta, very important students, okay। Standard angles, remember, again very important, if you will not remember this, chances are very less that you will score good marks in this, to be very honest। sin theta 0, sin 30 half, sin 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 91, तो ये आपको याद करना है, you have to just remember it, I don't think you can do anything else here, okay, you have to remember anyhow। मेंसुरेशन में स्पीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर CSA 2 पाई आर एच, 2 पाई आर into r plus h, volume is pi r square h। So like this I have compiled all the formulas, all formulas, I hope it will help you, okay। मैं समझाऊंगा कभी और कि वो फॉर्मूला आया कैसे, अभी एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पर कार्ड का फॉर्मूला बहुत रखना है याद, कार्ड के डिटेल्स याद रखने हैं, एग्जाम में आते हैं। There are 4 types of cards, one is hurt, another is like this, okay, this is club, diamond, spade, diamond, club and hurt, सबके 13 ग्रुप्स हैं, टोटल कार्ड्स 52, इसमें 3 फेस कार्ड्स इन ईच, ठीक है, 1 क्वीन, 1 किंग, 1 जैक, ठीक है। मैं ये कार्ड का डिटेल बताया, आप और भी चीजें तो आएंगी ना, कॉइन्स आएगा, इसमें डाइस आएगा, तो आपको वो याद करना है, बट ये क्योंकि फॉर्मूला का एक कंपाइलेशन है, सो आई एम जस्ट सेइंग द फॉर्मूला हियर एंड विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट वीडियोस। मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि पिछले साल किन चैप्टर से, हर चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सेंड PDF ऑफ दिस इन द टेलीग्राम चैनल, okay, study hard, take care of yourself, bye bye, thanks for watching my dear students।